Hello student. In my last two lecture, we discussed differentiability of function of two variables. Today we will continue differentiability of function of two variables. Very important theorem beta. Let function of x and y be a real value function with the domain of f subset of R square such that partial derivative of f with respect to x is continuous at point AB and partial derivative of f with respect to y exists as point AB. Then we prove f is differentiable at point AB. You will try beta. Partial derivative of f with respect to y continues and partial derivative of f with respect to x exists. Please try. Proof. बेटा टू प्रूफ की प्रूव करना है अपने f is differentiable at point A B. टू प्रूफ बेटा डेफिनेशन में लास्ट टू वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਈ ਸੀ बेटा f a plus h b plus k minus f a b बेटा f of a b बेटा एक इसी neighborhood point of a b. This one equal to h partial derivative of f with respect to x at point AB plus k partial derivative of f with respect to y at AB plus epsilon 1 h epsilon 2 k epsilon 1 epsilon 2 tends to 0 as hk tends to 0 independently. Okay beta, to prove this f left hand side beta f a plus h b plus k minus f a b. We write this f a plus h b plus k minus because partial derivative of f with respect to y exists. This means f a b plus k minus f a b upon k limit k tends to 0. Okay, so we add f a plus b a b plus k minus plus f a b plus k minus f a b. Consider first. Okay beta. बेटा अपन की given है बेटा given because partial derivative of f with respect to x is continuous at point AB, then partial derivative of f with respect to x exists in neighborhood of A. बेटा by mean value theorem, बेटा मैं कराई सुन by mean value theorem of R square. बेटा प्रूव कराया हुआ बेटा प्लीज ये लास्ट टू वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ बेटा by mean value theorem of R square f a plus h b plus k minus f a function of a b plus k. This one is equal to beta h difference partial derivative of x. ठीक है बेटा equal to h partial derivative of f with respect to x a plus theta h b plus k. Take second. Okay बेटा. Next बेटा अपन given है partial derivative of f with respect to x is continuous. Okay. At a b. So limit hk tends to 0 0. Partial derivative of f with respect to x a plus theta h b plus k. Okay, this one is equal to partial derivative h0 k0 partial derivative of f with respect to x at a b. So partial derivative of f with respect to x b plus k tends to partial derivative of f with respect to x of AB as hk tends to 0 0. Clear है बेटा point?
क्योंकि जो फंक्शन कंटिन्यूस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਟੇਕ ਦਿਸ ਓਕੇ fx ab so beta this one tends to L so a plus theta h b plus k is equal to ab plus epsilon 1 okay beta as hk tends to 0 0 clear beta epsilon depend on hk clear beta point this one so we take third from second and third f a plus h b plus k minus f b plus k this one equal to h value put करती बेटा this one equal to h partial derivative of f with respect to x at ab plus h of okay beta first then take second beta given की अपन because partial derivative f with respect to y exist at beta a okay exist at point a so exist then we write limit k tends to 0 f of a b plus k minus f of ab upon k equal to partial derivative of f with respect to y at ab okay beta मैं रिपीट कर देना बेटा लेट बेटा फंक्शन ऑफ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा लेट f function of x and y is a real value function with the domain such that given किया बेटा partial derivative of f with respect to x continues partial derivative of f with respect to y exists then prove f is differentiable then prove this f a plus h b plus k minus f a b बेटा मैं प्लस माइनस कितना है f फंक्शन ऑफ a b plus k प्लस ते माइनस रीजन बेटा प्लीज बिकॉज a function of f with respect to y exists we take this so given बेटा फंक्शन कंटिन्यूस है so naturally exist करेगा क्योंकि बेटा जो फंक्शन कंटिन्यूस है वो exist करेगा in the neighborhood of a so by mean value theorem बेटा neighborhood means ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬਾय ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਬੇਟਾ ਆਫ r ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਦਿਸ h fx ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ देन ये कंटिन्यूस है बेटा कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करते दिस वन व्हेन लिमिट h k टेंड्स टू 0 दिस वन इक्वल टू दिस सो इसका मीनिंग क्या है बेटा दिस वन टेंड्स टू दिस as h k tends to 0 0 बेटा पढ़े ना बेटा लिमिट x tends to a we write fx equal to l means ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेटा fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ l ਨੂੰ ਟੈਂਡਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ when x tends to a so h k tends to 0 approximate equal so we take epsilon 1 epsilon 1 किसका फंक्शन है बेटा h k when h k tends to 0 epsilon 1 tends to 0 okay beta then put this value in second so first ये आ गया बेटा इसमें रख लो बेटा नंबर 4 okay beta then partial derivative f with respect to y exists at ab then by definition beta we write this so beta this one equal to partial derivative of f with respect to y at ab we write this f a plus h sorry a b plus k minus f a b upon k tends to partial derivative of f with respect to a b as k tends to 0 so we write f a b plus k minus f of a b upon k this one equal to partial derivative of f with respect to y at a b plus epsilon 2 depend upon k then f a
b plus k minus f of ab equal to k partial derivative f with respect to ab plus k epsilon 2 as epsilon 2 tends to 0 as k tends to 0 okay बेटा स्टार्टिंग अपने फर्स्ट कंसीडर किया सी फर्स्ट 4 and 5th we have पार्स f a plus h b plus k minus f of a b is equal to बेटा a वाली वैल्यू पुट करते कितनी आ गई h पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए बी प्लस एच एप्सिलॉन 1 प्लस के पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए बी प्लस के एप्सिलॉन 2 वेयर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 एज एच के टेंड्स टू 0 इंडिपेंडेंट सो बेटा ये प्रूफ हो गया एफ के हो गया बेटा आपका लवे डिफरेंशियल फंक्शन हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा In my next video, we start examples of differentiability of two variables. Thank you very much, beta.